Hello everyone, my name is Sunita Kumari, and today in this session we are going to learn about respiration, which is a very important life process. Okay, so the first question which comes to our mind is, why do living beings respire? Right? So the energy that is needed for organisms to grow, to move, grow, excrete, and reproduce is obtained through consumption of food. Right. So in this point, we in this point is trying us to convey us that keep the consumption, the whatever the food we consume, okay, that food is giving energy, and this energy in turn is helping the organisms to carry on this life processes like movement, growth, excretion, reproduction. So in order to do all this task, the organism need energy, and the energy comes from the consumption of food. Okay, now the second point is to use the energy available in food. Living organisms need to break down the food molecules through oxidation. So now this the food is basically the source for energy. Okay, now this energy source has to be metabolized, the source has to be broken down so that there can be liberation of energy. Okay, and this process is basically called as, or is done as, through oxidation. Okay, now this process breaking down of the food is basically done in many pathways, and this pathway can differ from organisms to organisms, and among them the two major pathways used are, in one pathway there is a involvement of oxygen, or oxygen is used to break down glucose. Okay, and this glucose is nothing but the main source for energy which is stored in the food. Okay, now this glucose will be broken down in the presence of oxygen to give rise to carbon dioxide, water plus energy. And in some or other organisms, they don't use oxygen to do this. Okay, and about this we will discuss about this pathway, these two pathways, in the upcoming slides. Okay, now in both the pathways, the main step, the first step will be saved, which is the glucose. Okay, so glucose is basically a 6 carbon molecule, and this 6 carbon molecule will be broken down into 3 carbon molecule, and this 3 carbon molecule is called as pyruvate. Okay, and this step happens in the cytoplasm of a cell. Okay, and from this pyruvate, it will enter the mitochondria, or it will remain in the cytoplasm of a cell, and this depends and basically this depends on the whether there is oxygen available or whether there is oxygen not available. So whatever the product will form from pyruvate, it depends on the availability of the oxygen. Now let's try to define what is a respiration. Okay, so respiration is a process by which living organisms produce energy from the food consumed. Okay, and it is a very complex process which involves biochemical and physical process. Okay, so basically respiration is not a single step process, it's a multi-step process, and it involves biochemical and physical processes. Okay, so biochemical process is basically the like processes, uh, chemical reactions, or the uh, process which is happening inside the cell, and physical process is the one which is happening outside, or just like the breathing, taking in air and taking out air, that will come under the physical process. Okay, now this flow chart represents the various events that happens during respiration. Okay, so as you can see that there are five events that
together, or that happens during respiration. Okay, now the first step is breathing, where movement into and out of the lungs occurs. Okay, so there will be taking in of oxygen and taking out of carbon dioxide from the lungs. Next, once the gases have reached their destination, they will be exchanged between alveoli and the blood, and this step is followed by the transport of uh, gases by blood to the various tissues and organs of the body, and then this will be followed by the gaseous exchange between blood and the tissues, and then once the cells have acquired the gases, they will be using this to produce energy. Now let us talk about ATP. So ATP is basically, okay, so ATP is basically the energy currency of a cell. Okay, it's a energy currency of a cell. Okay, it's an energy currency of a cell. That means that the cell needs ATP to do its proper functioning. Okay, so you can imagine the role of ATP as the role of batteries in electronic devices. If there is no battery in the electronic devices, the electronic device is not going to work. So in a similar fashion, cell needs energy, and that energy comes in the form of ATP. Okay, and this ATP, okay, this ATP stands for adenosine triphosphate. Okay, so ATP stands for adenosine triphosphate and is the energy currency of a cell. Okay, okay, so now how is ATP produced in a cell? Okay, so the energy released during respiration is used to make ATP molecules from ADP and inorganic phosphate. Okay, so that in another words, the ADP and inorganic phosphates are used. Okay, and these two will combine in a chemical reaction where energy, which is the product of respiration, will be used, and then we will get the ATP. Okay, and this is the chemical reaction for ATP formation. Okay, and this ADP is basically, it is adenosine diphosphate. Okay, so ADP and ATP. Okay, the difference between these two is that in the difference between these two is that in ATP there is three phosphate groups, and in ADP there will be presence of two phosphate groups. Okay, now this ADP plus inorganic phosphates will combine in the presence of energy to give rise ATP. Okay, now this ATP will be stored in cells. Okay, as a energy source. Now whenever the cells required energy, this ATP will be broken down in the presence of water. Okay, in the presence of water to form ADP, and energy is released. Okay, so the cells need energy that time,
ATP is broken down in presence of water to form ADP and energy is released. Okay, so this is the role of ATP. So ATP is basically the energy currency of cell. It stands for adenosine triphosphate, and it is formed from ADP and inorganic phosphates. Okay, now let's talk about types of respiration. Okay, so basically there are two types of respirations. The first one is aerobic respiration. Now this aerobic respiration takes place in the presence of oxygen, and this happens inside the mitochondria. ठीक है, so aerobic respiration जो होता है वो प्रेजेंस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है और ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है. ठीक है, एंड जो energy produced during a aerobic respiration is more energy. Okay, so when you compare with the other type of respiration, the aerobic respiration produces more amount of energy. Okay, now what are the byproducts of aerobic respiration? So the byproducts of aerobic respirations are basically carbon dioxide, water, and energy. Okay, so energy is also produced, and along with energy, carbon dioxide and water is also produced. So this is about aerobic respiration. Now anaerobic respiration. So anaerobic respiration takes place in the absence of oxygen, okay, in muscle cells or yeast. Okay, so we were talking about anaerobic respiration. Anaerobic respiration takes place in the absence of oxygen, and this happens in the muscle cells or yeast. और ईस्ट में जब ये होता है तो ईस्ट वाले को हम जनरली ये फर्मेंटेशन से होता है. ठीक है, now the next point is that when we compare the energy released in anaerobic respiration with aerobic respiration, the amount of energy released is very not very less, but you can say it's less when you compare with the aerobic respiration. And the end products of anaerobic respiration is lactic acid. Okay, and this lactic acid is produced in muscle cells, or ethanol, carbon dioxide, and energy. Okay, so energy, ethanol, carbon dioxide will be produced as the end product of anaerobic respiration. ठीक है, so इन दोनों को याद करने का आप एक ये भी तरीका ले सकते हैं कि एरोबिक मतलब बेसिकली होता है एयर. ओके, ओके, एरोबिक मीन्स होता है एयर, एंड एना मीन्स होता है नॉट और एब्सेंस. ठीक है, एंड एरोबिक इज एयर. सो इन दिस respiration there will not be presence of oxygen. Okay, so this figure is basically a path is basically different pathways for the breakdown of glucose. Okay, so you okay, so glucose is basically 6 carbon molecule, and it is a main energy source that a organism get from its food. Okay, now this glucose will be broken down into 3 carbon molecule, okay, plus energy, and this is a 3 carbon molecule, right? And this 2 steps, okay, this steps basically happens in the cytoplasm. Okay, cytoplasm of a cell.
right? Now from this pyruvate, it will have different pathways for the further metabolism. Okay, and this further process depends whether there is an absence of oxygen, like in case of yeast, or there is lack of oxygen in case of muscle cells, or presence of oxygen in case of mitochondria. ठीक है, so first we'll discuss about the absence of oxygen. absence of oxygen मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ये लोग ऑक्सीजन की इन्हें जरूरत ही नहीं है, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होता, तो ये क्या करते हैं कि ये पायरुवेट को प्रोसेस करके they make these products which is ethanol, carbon dioxide and energy. Okay, now ethanol is a 2 carbon molecule. Okay, now lack of oxygen, so lack of oxygen happens in an muscle cell. ठीक है, so sometimes you have seen that during rigorous exercises there is a like you feel like cramping. Okay, and this cramping happens because when you're doing a rigorous exercise, the muscle cells have not sufficient amount of oxygen, right? So at that time what they do is they will convert this glucose into this lactic acid plus energy. Instead of converting into this, they'll do this pathway. They choose this pathway because there is insufficient oxygen available to the muscle cells. ठीक है, और ये जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है ये नॉर्मल प्रोसेस होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनती है. सो दिस इज अ कंप्लीट पाथवे ऑफ द glucose breakdown. Okay, now after this the next question comes is कि how living beings acquire oxygen. तो हमने पिछले स्लाइड्स में पढ़ा था कि aerobic respiration happens in the presence of oxygen, right? Now when oxygen is so required for aerobic respiration, how does an organism acquire this oxygen? Okay, now in this we will discuss first about plants. So how plants acquire oxygen, right? So plants exchange gases through stomata, and large intercellular spaces ensure that all cells are in contact with air. ठीक है, हमने प्लांट के स्ट्रक्चर में पढ़ा था कि प्लांट्स की लीव्स में एक स्ट्रक्चर हो. ओके, okay, the plant leaves have like this structures. Okay, so these structures we call them as stomata. Okay, now basically this stomata is the one which helps the organism, which helps the plant okay, this stomata helps the plant to uh, exchange gases. Okay, now carbon dioxide and oxygen are exchanged by diffusion here. ठीक है, so बच्चे एक चीज याद रखना कि जो gaseous exchange होता है plants में, you take or you take in animals, basically they are done through diffusion here. ठीक है, so diffusion के through this gases are exchanged. Okay, and how the plants acquire oxygen or other gases is with the help of stomata, and there will be intercellular spaces which ensures that all the cells are in direct contact with the air. Okay, air के direct contact में हो, ये इनका ऐसा arrangement होता है plants में. ठीक है, तो डिफ्यूजन से नाउ दिस कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन जो होते हैं ये these are exchanged by diffusion. Okay, so they will go into the cell and out of the cell through diffusion only. Now the direction of the diffusion. ठीक है, now you have studied in chemistry में आपने पढ़ा है कि diffusion जो होता है वो various factors पे depend करता है, उसका rate जो होता है वो बहुत factors पे depend करता है. तो same way यहाँ पे जो diffusion का direction है कि मतलब
diffusion किस direction में होगा and at what rate it will happen, it depends on the environmental conditions and the requirement of the plant. ठीक है, environmental conditions means like whether it's a sunny time or it's a rainy time. ठीक है, और रिक्वायरमेंट कितनी है प्लांट को, मतलब रिक्वायर्ड है कि नहीं है. ओके, सो इन लाइक इन दैट पॉइंट एट नाइट, ठीक है, रात में आपने ना एक स्टोरीज सुनी होगी कि दे से दैट यू शुड नॉट स्टैंड अंडर अ ट्री एट नाइट. Why they say? Because at night plant releases carbon dioxide, और हमने ये देखा है कि plants का रोल क्या होता है कि वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, but at night what happens that plants, there is no photosynthesis occurring at night. ठीक है, and because of this CO2 elimination is the major exchange activity going on. This means to say कि रात में when there is no photosynthesis, CO2 का elimination होता है ज़्यादातर instead of producing oxygen. ठीक है, so when we compare, there will be more amount of carbon dioxide is getting released rather than oxygen. Okay, and during daytime CO2 is generated during respiration. ठीक है, so plants जो होता है वो photosynthesis करता है, and photosynthesis में जो एक requirement जो material raw material होता है वो होता है CO2, and CO2 we get CO2 the plants get by the respiration of different organisms. ठीक है, तो CO2 जो होता है वो उस टाइम डे टाइम में प्लांट यूटिलाइज करता है, and O2 and there is no CO2 release in the daytime. okay, उसकी बजाय ऑक्सीजन का रिलीज होता है. ठीक है, so this is how the plants acquire oxygen. Now let's talk about aquatic animals. ठीक है, so जो aquatic animals होते हैं, as you know that the aquatic animals they live inside the water, right? So पानी में जो रहने वाले जीव जंतु होते हैं, we call them as aquatic animals. ठीक है, now these aquatic animals they use the oxygen which is dissolved in the water. ठीक है, तो एक्वेटिक एनिमल्स के लिए क्या होता है कि इनमें ना जो जिस पानी में ये रहते हैं उसी पानी में ऑक्सीजन डिसॉल्व होगा, but that oxygen concentration is very less. ठीक है, so due to that the breathing is very faster and frequent. You have seen in aquarium में देखा होगा आपने कि जो मछली होती है वो बार बार अपना मुंह खोलती है, and this is because they trying to breathe faster and frequently to get more and more of oxygen, and this is because there is low amount of dissolved oxygen in water. ठीक है, अभी क्या होता है कि जो फिशेस होती है, जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि फिशेस अपने माउथ के थ्रू इनका जो वाटर है, ठीक है, वो अंदर जाएगा. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डिफ्यूजन के थ्रू गैस एक्सचेंज होने के बाद यही वाटर जो है वो गिल्स के थ्रू बाहर आ जाएगा. ओके, सो दिस इज हाउ द वाटर फ्लोज इन अ फिश. ओके, now let's talk about gas exchange in terrestrial organisms. So terrestrial organisms वो organisms होते हैं जो जमीन पे रहते हैं. You can say कि जमीन पे रहने वाले organisms को we call them as terrestrial organisms. Okay, and these terrestrial organisms basically they use oxygen which is present in atmosphere. Okay, so atmospheric oxygen use करते हैं terrestrial animals. Then this to get this atmospheric oxygen they have different organs in different organisms. So different organisms, say in example cockroach, you say for earthworm, you say birds, you say frog, okay, crocodiles, all these have different organs to get this atmospheric oxygen. Okay,
Now the speciality of this organs is that the structure is designed in such a way that it will provide a more surface area. ठीक है, तो surface area जब ज़्यादा होता है तो it is easy to diffuse the gases. Okay, and then the exchange of oxygen and carbon dioxide will take place at this surface only. राइट, सो जो सरफेस जहाँ पे ये गैसेस एक्सचेंज होता है वो बहुत डेलिकेट एंड फाइन होता है. ठीक है, मतलब डेलिकेट एंड फाइन होता है, सो इट हैज टू बी प्रोटेक्टेड. ठीक है, तो ये जो प्रोटेक्शन होती है ना, ये जनरली आप ये ऑर्गन्स को बॉडी के अंदर में दिस मिलेंगे. ठीक है, सो जब ये बॉडी के अंदर में मिले रहते हैं तो ये गैसेस को उस जगह जाने के लिए एक पैसेज होता है. राइट, दैट there will be a passage that will take air into this area, and there will also be a mechanism by which the air is moving in and out of this area. Okay, so अब हम पढ़ते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में. ठीक है, तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में the main organs of the respiratory system are nostrils, nasal cavity, pharynx, larynx, trachea, bronchi, bronchioles, lungs and diaphragm. ठीक है, तो ये सारे के सारे जो organs हैं, okay, these organs together make respiratory system. Okay, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो पहला होता है वो नॉस्ट्रल्स होता है. नॉस्ट्रल्स जो होता है इट्स बेसिकली like the small holes that you see on your face, like माउथ के ऊपर जो आप अपने नाक के पहले में एक दो छेद देखते हैं, that is called as nostrils. and nostril जो होता है वो nostril cavity में को follow करता है. ठीक है, and nasal cavity leads to pharynx, then it leads to larynx. Okay, larynx, and then it leads to trachea. Okay, now as you can see in this figure, the trachea will have a, like, it will be protected by a ring. Okay, so ये जो ring होती है ना, okay, so suppose this is the trachea. Okay, so this is trachea. Now this so this will be protected by ring like structure like this. Okay, so it's a C shape. जैसे ये C shape होता है ना, ठीक है, तो इसी शेप में ना ये कार्टिलेजस रिंग्स होती है. ओके, ओके, सो कार्टिलेज की रिंग्स ऐसी होती हैं. ठीक है, तो ऐसे ना रिंग्स ना बनी होंगी ट्रेकिया में. ओके, तो ये जो रिंग होती है ना ये हाफ में ही होती है, मतलब ये रिंग आधी ही कवर करती है, पूरी कवर नहीं करती. ठीक है, सो इन रिंग्स का रोल क्या है कि दिस रिंग्स हेल्प्स इन दिस रिंग्स. ओके, सो दिस रिंग बेसिकली सपोर्ट्स दी ट्रेकिया. ठीक है, सो सडनली आप एयर लेते हो बहुत फोर्स में, प्रेशर में, तो देयर आर चांसेस दैट दिस माइट कोलैप्स. राइट, सो इस कोलैप्सिंग को प्रिवेंट करने के लिए these cartilaginous rings are provided. Okay, now after this trachea is this structure you can see, right? So ट्रेकिया के बाद ना क्या होता है कि दिस ट्रेकिया विल नाउ ब्रांच ऑफ इन लेफ्ट एंड राइट लंग्स. ठीक है, सो ये जो ब्रांचिंग होती है इसे हम कहते हैं ब्रोंकाई. ओके, ये यू कैन सी, इसे हम ब्रोंकाई कहते हैं. नाउ दिस ब्रोंकाई विल एक्सटेंड. ठीक है, ये अंदर और डीप जाएगा लंग्स में, एंड वहां से ये और छोटे छोटे फाइन branches बनाएगा, and these small fine branches are called as bronchioles, and these branches will terminate into a balloon like structure जिसे हम कहते हैं alveolar sac. ठीक है, तो आप इसे ना ऐसे समझ सकते हो, just like a tree is there. ठीक है, so now suppose this is the tree का trunk. ठीक है,
नाउ ये जो ट्री का ट्रंक है, यहाँ से एक ऐसे 2 ब्रांचेस हो गई, ठीक है। अब ये जो ब्रांचेस है ये इन्होंने और अपने ऐसे ऐसे छोटे छोटे, ठीक है, ऐसे ऐसे छोटे छोटे ब्रांचेस बनाए हैं, ठीक है। दे हैव मेड this small type branches. Okay, now these branches will start having their own leaves or flowers, whatever, ठीक है। so ऐसे ना ये बहुत सारे leaves branch ऐसे से बनाएगा, ठीक है। तो सेम वे में जब आप इसको उल्टा कर दोगे ना, तो सेम वे आपको ये वैसे ही दिखेगा जैसे ये एक रेस्पिरेटरी सिस्टम में होता है। तो ये जो ट्री का ट्रंक था, यू कैन इमेजिन दिस ट्री ट्रंक एज दी ट्रेकिया, ओके। नाउ दीज 2 ब्रांचेस आर ब्रोंकाई, ओके। एंड दीज, ये जो छोटे छोटे थे, ठीक है, इसे हम कहेंगे ब्रोंक्यूल्स, ओके। और ये जो बलून शेप स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं, मतलब ये जो लीव्स हैं इस पेड़ के, वो है हमारे एल्वुलाई, ठीक है। और यही रीजन है जहां पे मेन गैस एक्सचेंज होता है, ठीक है। ओके, अंडरस्टूड द स्ट्रक्चर, ठीक है। okay, and this ओके। नाउ आप इसके नीचे ने यहाँ पे आप ये जो ब्राउन कलर का देख रहे हैं, दिस इज डायफ्राम, ठीक है। सो डायफ्राम इज बेसिकली अ मस्कुलर स्ट्रक्चर थ्रू like which when contracts and relaxes helps the movement of air in and out, ठीक है। So the fringe of hair and mucus layer on the walls of nasal cavity trap dust and foreign particles, ठीक है। So you must have observed that inside your nose, that inside the nose there are small fine hairs and there are mucus layers, ठीक है। So what they do is this hairs and mucus, they will try to trap the dust and foreign particles, ठीक है। तो जब आप सांस लेते हो तो कुछ फॉरेन पार्टिकल्स, बैक्टीरियाज, डस्ट जो होते हैं वो अंदर जाने की कोशिश करते हैं। तो इनको ये जो हेयर्स और म्यूकस लेयर है ये इनको प्रिवेंट करता है अंदर जाने से, ठीक है। अब ये जो हमारा ऊपर का पार्ट होता है ना, ये नेसल पैसेज ट्रेकिया, ना यहाँ पे क्या होता है कि एयर को वार्म और मॉइस्ट किया जाता है, ठीक है। एंड देन उसके बाद ये लंग्स में जाता है हमारे, ओके। अब ये जो ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई है, इनकी वॉल्स भी जो होती है इनमें ना सीलिया होते हैं। सीलिया इज अगेन अ स्मॉल फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। एंड म्यूकस होती है, तो इनका रोल भी सेम वही होता है कि दे ट्रैप दी हार्मफुल बैक्टीरियाज, ठीक है, एंड दे पुश देम टुवर्ड्स दी nose so that they will be sneezed out, okay. Now next come is, where is this lungs located, okay. So these lungs are basically located inside the thoracic cavity, और ये जो lungs होते हैं ना, ये left side और right side में होगा, and these lungs will be protected. So these you can see, you know, these are structures. So these structures are basically ribs. ये bone के structures होते हैं। तो ये bone के structures जो होते हैं ना, ये हमारे soft organs like lungs को prevent करते हैं, मतलब protect करते हैं, ठीक है। Now this is the structure of an alveolar capillary network, ठीक है। So alveolar capillary network means is that as I said in the previous slide, that alveoli is the area where the main exchange of gases takes place, ठीक है। So जो ये आप एक structure यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये है bronchioles, ठीक है, ये bronchioles है and ये है alveoli, ओके। नाउ ये जो एल्वुलाई है, यहाँ पे आप ये रेड कलर में एक कैपिलरी देख रहे हो और एक ब्लू कलर में, ठीक है। सो जो ब्लू कलर है ये ऑक्सीजन रिच ब्लड लेके आएगी, एंड दिस रेड कलर विल ब्रिंग दी
कार्बन रिच ब्लड, राइट। तो यहाँ पे आके ये दोनों का एक्सचेंज होता है। Okay, so this is the complete network. So this is how a alveoli looks like. Okay, तो alveoli में आप यहाँ पे you can see that there are very small balloon shaped structures. ठीक है, so this increases the surface area for gas exchange, and they will be supplied with many number of capillaries. ठीक है, so that there is efficient supply of gas exchange. Okay. Okay, so this is a flow chart for the transport, how the gas is exchanged or transported throughout the body. Okay, so the first one is for oxygen and second one is for carbon dioxide. So in oxygen, this oxygen oxygen rich air is taken inside the lungs in alveoli, where the blood will take up this. Okay, so blood will take up this oxygen, and then in blood में there is a structure which is called hemoglobin. ठीक है, so hemoglobin जो है ये O2 के साथ bind होगा, and then it will take it to the tissues where it will be released. Okay, CO2 का क्या होगा, CO2 जो होता है वो हमारे सेल के अंदर बनेगा, ठीक है, एज एंड रिजल्ट ऑफ द सेलुलर रेस्पिरेशन. ठीक है, और ये जो होगा ये ब्लड में डिसॉल्व होके आएगा, एंड देन इट विल रीच द ब्लड कैपिलरीज इन एल्वुलाई, और ये एल्वुलाई में मतलब ब्लड से एल्वुलाई में जाएगा, और फ्रॉम एल्वुलाई इट गोस आउट टू द ट्रेकिया एंड नोज, एंड देन इज ब्रीथ आउट. ओके, एंड ये उसका पूरा स्ट्रक्चर. सो दिस इज द सेल का line. ठीक है, and this is the alveoli. Okay, now यहाँ पे you can see that oxygenated blood is coming, right? So this is RBCs, and RBCs will have hemoglobin. They will take the oxygen and then it will goes to the tissues. Then similar fashion carbon dioxide will diffuse into this alveoli, and then it will be blown out. Now we have understood the respiration. We have also understood how the like this how the gas exchange is taking place. Now let us understand how the organism is breathing. So what is the mechanism of breathing in organism, right? So before that, first let us see what is the flow of air inside the body, right? So the air will enter through the nostrils, it goes through pharynx, larynx, trachea, bronchi, and then it enters the lungs. Okay, so this is the flow of the air. Okay, now when we breathe in का मतलब क्या है कि जब हम ऑक्सीजन जब हम सांस लेते हैं, right? So that time what happens that this diaphragm muscles contracts, okay, and when they contracts they are pulled downwards. Okay, so when they are pulled downwards, the chest cavity expands and air enters into the lungs. ठीक है, सो ये ब्रीदिंग इन के टाइम होता है. ब्रीदिंग आउट के टाइम क्या होता है कि जो डायफ्राम मसल्स होंगे वो रिलैक्स हो जाएंगे एंड दे विल बी पुल्ड अपवर्ड. ठीक है, एंड ड्यू टू दैट द चेस्ट कैविटी रिलैक्सेस. मतलब चेस्ट कैविटी जो होती है ना वो कम मतलब कॉन्ट्रैक्ट होती है एंड एयर जो होती है वो पुश्ड आउट होती है. ठीक है, सो you can understand with this experiment. Okay, so there are two bell jars taken. Okay, now in this bell jar there is a tube fixed, and along with the tube there are two balloons fixed. Okay, so these balloons represent the lungs, this branching represents the bronchi, this represents trachea. Okay, now and here is a rubber plate. So now this rubber plate basically will represent as a diaphragm.
Okay. Now what happens is what happens that when we have, now if you pull this rubber downwards, okay, so that means contraction. Okay, so downwards is the pull karenge, so this lungs, okay, you can see that the capacity has increased here, right? And because of this the air goes inside the lungs, right? Now if you remove this, now if you just uh, मतलब जब आप इसे छोड़ देंगे, ठीक है, तो आप देखना कि ये ऊपर की तरफ जाएगा, एंड व्हेन इट गोज अपवर्ड्स द वॉल्यूम डिक्रीजेस हियर, एंड बिकॉज ऑफ दिस द एयर इज पुश्ड आउट. ओके, सो हम उसे ब्रीदिंग आउट को एक्सपिरेशन कहते हैं, एंड ब्रीदिंग इन इज कॉल्ड एज इंस्पिरेशन. Okay, so this is the diagram of how it happens in the this is a diagrammatic view of an humans body. Okay, so humans body में कैसे होता है. Now one more point to remember is that the lungs is never empty of air. Okay, there will be decrease in the amount, but the lungs will always have some amount of air left in it, right? So this amount of air is basically called as residual volume. Okay, it is called as residual volume, and so that there is sufficient time for oxygen to be absorbed and carbon dioxide to be released. ठीक है, तो ये हमेशा इसलिए रहता है ताकि कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का जो एब्जॉर्प्शन रिलीज है वो उसके लिए एक sufficient time हो. So the lungs will never be deprived of the air. Okay. Now the next point is the respiratory pigment. Okay, when the body size of animal is large, okay, so the human's body, or you can see the elephant's body, right, their body is so large and shiny, so diffusion pressure cannot take this oxygen to all the organs of the body, right? So to achieve this task there comes the role of respiratory pigment. ठीक है, सो रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या करते हैं कि ये ऑक्सीजन लेते हैं अपने साथ. ठीक है, इट्स लाइक कि आपको कहीं से बहुत दूर से सामान लेके आना है. ठीक है, तो वो सामान अगर आपके पास गाड़ी है तो इट इज इजी फॉर यू टू कैरी टू अ फार डिस्टेंस, राइट? सो सेम वे में जो हेमोग्लोबिन है वो एक ट्रक की तरह काम कर रहा है, तो वो ट्रक जो है वो ऑक्सीजन लेगी, एंड ये ऑक्सीजन जो है बाकी डिलीवरी स्टेशंस पे, मतलब डिलीवरी स्टेशंस इन द सेंस की ऑर्गन्स में डिलीवर कर देगा. ठीक है, सो दैट इज व्हाट इट डज. सो ह्यूमंस में जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है दैट इज कॉल्ड एज हेमोग्लोबिन. Okay, and hemoglobin is have a high affinity for oxygen, meaning to say that hemoglobin जो है वो ऑक्सीजन से काफी इजीली और बहुत जल्दी बाइंड कर जाता है. ठीक है, सो दिस जो हेमोग्लोबिन होता है ये होता कहाँ है? दिस हेमोग्लोबिन इज बेसिकली प्रेजेंट इन दी रेड ब्लड सेल्स विच आर फाउंड इन अ ब्लड. ओके, ये हमारे ब्लड के जो आरबीसीज होते हैं उनके अंदर में हेमोग्लोबिन होता है. ठीक है, हेमोग्लोबिन में बेसिकली आयरन मॉलिक्यूल होता है, एंड इसमें क्या होता है कि ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये ऑक्सीजन को बाइंड करते हैं. ठीक है, and after this binding they will go to the target organs and then deliver the oxygen. Okay, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है is more soluble in water than oxygen and hence is mostly transported. ठीक है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो जनरली ट्रांसपोर्ट होता है बिकॉज वो वाटर में बहुत इजीली डिसॉल्व हो जाता है. ठीक है, so that's all about this respiration. So respiration में we have studied the importance of respiration, definition of respiration, how oxygen is acquired, the mechanism of breathing, and the respiratory pigments. So I hope you all have understood this lecture. Thank you.